Good morning, students. In this presentation, we are going to look at aromatic versus anti-aromatic and non-aromatic compounds. Also, we are going to discuss about the Huckel's rule and simple trick to find the aromatic compounds. Let's start with aromatic. In order to be aromatic, a molecule must satisfy following four criteria. It should be cyclic, it should be conjugated. Conjugated system means double bond separated by single bond. That means double bond and single bond are alternatively placed. Next, it should be planar, and a molecule must satisfy Huckel's rule and have 4n plus 2 pi electrons, where n equal to 0, 1, 2, 3 or so on. If n equal to 0, then number of pi electron will be 2. If n equal to is 1, then number of pi electron will be 6. If n equal to 2, the number of pi electron will be 10, and n equal to 3, number of pi electron will be 14, and so on. If these four conditions are met, then the molecule is aromatic. The best example is benzene. The benzene, because it is cyclic, it is conjugated, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Benzene is flat, sp2 hybridized, and also there are 3 pi bonds are present. That means total 6 pi electrons are present. That means it satisfies 4n plus 2 pi electrons or Huckel's rules. So benzene is aromatic. Next is anti-aromatic. In order to be anti-aromatic, a molecule must satisfy following four criteria. It has to be cyclic, it has to be conjugated, it has to be planar, and have 4n pi electrons. If these four conditions are met, then the molecule is anti-aromatic. That means n equal to, if n equal to 1, the total number of pi electron will be 4. If n equal to 2, total number of pi electron will be 8. If n equal to 3, total number of pi electron will be 12. So example is cyclobutadiene. Get 2 5 bonds, that means total 4 pi electrons. So cyclobutadiene is anti-aromatic. So main difference between aromatic and anti-aromatic: in case of aromatic, they must have 4n plus 2 pi electrons, and in case of anti-aromatic, they have 4n pi electrons. Remaining all 3 points are same. Next is non-aromatic. If a compound violates any one of the above 3 conditions, like cyclic, conjugated ring system or planar, then it is non-aromatic in nature. The best example is 1,3-butadiene. 1,3-butadiene is open chain structure.
so it is non-aromatic in nature. Next is stability. As per the stability is concerned, the aromatic compound are most stable compound and anti-aromatic are least stable compound. तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है एरोमेटिक कंपाउंड का है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक का है, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी है दैट इज एंटी एरोमेटिक के हैं. नाउ हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे देखो कि कौन सा आपके एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है. फर्स्ट वन, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 6, सो इट इज एरोमेटिक. सेकेंड केस में क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 4e, so it is anti-aromatic. In third one, the number of pi electron जो है that is 8, so it is also anti-aromatic. That means number of pi electron अगर 2, 6, 10, 14 हो तो वो हो जाएगा एरोमेटिक. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 4, 8, 12, 16 हो तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक. फोर्थ वन इज नॉन एरोमेटिक है. फिफ्थ वन इज, ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये इसमें साइक्लिक रिंग नहीं है. यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है 10 है तो ये हो जाएगा हमारे एरोमेटिक्स. इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है 8 है तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक. इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है 6 है. 6 कैसे है ना, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और ये जो लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मिला के 6 हो गया. ये जो लोन पेयर अगर रिंग के अंदर है तो उसको काउंट करेंगे हम, अगर लोन पेयर रिंग के बाहर है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे. ये आपके हो गए एरोमेटिक. लास्ट वन सेम हेयर, 2 पाई बॉन्ड दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स को भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये रिंग के अंदर है. बाहर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. That means this compound is also आपके aromatic है.